Hello everyone. So, hello everyone. I'm Sudipta, welcoming you all to Vedang Teachings powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, audio video clear achi to? Good morning everyone. Good morning Arti, good morning Samresh, good morning Monos, good morning everyone. Jaldi jaldi connect ho so that we will start the class. Okay? All clear? Achi for her perfect timing. So पिला टिके connect हुंतु, then we'll start the class. ना कौन कहुच आरती आरती तमे सी ना जे कि केडी सांग क्लास रे कहतला कि सर आपण 10टा वाला क्लास भी कवर करि दियंतु मैम को क्लास हमें करिबुनी इच्छा नाही ब्ला 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 राइट सत कुह नारायण हेलो हाँ मते केडी सर कहिले कि आरती सेमती कहिची बोली हे केडी सांग पचारिबा तुम पचार फोन करिकी सर कहचंदी ना नहीं अब मुझे क्या पता आप क्या बोले हो क्या नहीं बोले हो तो पिला आसिया भितर मु आपण मानकु कहि दउची सो गणेश पूजा एंड पवित्र नुआखाई उपलक्ष्य आपण मानकर एबे आज ऑलरेडी लाइव अछि जो माने भी महापैक नेबाकू चाहूचंती ओके डन पचारिबा सो जो माने भी महापैक नेबाकू चाहूचंती त 2499 इज द प्राइस हमरटा डिक्रीज हे जाईची प्राइस ड्रॉप हे की 2499 हेची तो 1.5 ईयर होची तार वैलिडिटी जहाँ भितर कि आपनकर स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे जते भी एग्जामिनेशन आसीबो ओपीएससी लाइक एसओ सेक्रेटेरिएट एसओ एंड हमर हाई कोर्ट एसओ ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी जते भी ता अंडर रे आसीबो सब या को कवर अप करिवो हला एंड ए 2499 हमर जो प्राइस ड्रॉप हेची तार वैलिडिटी ओनली 3 दिन अछि जेमति कि आज काली एंड परदिन सो grab the offer do not delay okay hello everyone start करिबा पिल्ला सब कोड जाइचंदी आजी क्लास टाइमिंग जान नाहंती ग्रुप रे तो पड़ी थिला क्लास पई जाइचंदी कोड सब अच्छा चंदन संगर क्लास चली छी तो पिला सब सेठी अछंदी आज टाइम चेंज सेथि लगी अलगा क्लास रे हां चंदन संगर क्लास अछि ना सेटा नो प्रॉब्लम एटा जानि गले आसी जिवे क्लास ओके चलो तो स्टार्ट करिबा फर्स्ट क्वेश्चन टुडे क्लास जियोग्राफी रो किछि क्वेश्चन एंड कहा ऊपरे ना आपनकर आजिरो सेशन रहिछि क्लाइमेट ऊपरे about the climate of India तो या पर जते भी क्वेश्चंस आसीबो ताको धीरे धीरे करी कवर अप करिबा बट फर्स्ट ऑफ ऑल याको मेंशन करिछि देखो so which type of climate does India experience according to Koppen's classification what now according to yeah so tell me according to कौन ना कोपेन्स क्लासिफिकेशन इंडिया रा क्लाइमेटिक कंडीशन को क्लाइमेट टाइप को हमें केते भाग रे डिवाइड करिछे एंड सेटा तो क्वेश्चन आसीबो ताको फोर टाइप्स रे आपण माने जानिबे बट मोस्टली हमर कोन ना व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इंडिया हैज दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कोन होइबो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट आपण मानकर कोन कहिले ना जेते बेले की
द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ताको कह जाउची एएम बोली आपण कहि परिबे अंडर एटा कोपेन सिस्टम अंडर रे बिकॉज़ कोपेन ही एटा को प्रपोज करिथिले द ए ट्रॉपिकल सिस्टम ता जोथिरे की आपण माने पाई परिबे डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन कोन ना वेट एंड ड्राई मिक्स है कि जते बेले वेट एंड ड्राई मिक्स है कि जते बेले जो क्लाइमेट रे रहे आमे ताको कोन कहूचे ना मैम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट सीजन बोली कहूचे क्लियर वेरी गुड सो अबाउट आमे कहि परिबा केते ना इंडिया रो about 80% of India's rainfall is the monsoonal. So monsoonal rainfall amar India रा केते रहउची ना almost 80% रहउची and बहुत ही rare और rarest हमें देखिबा off season रे वर्षा हेबार आपण माने देखि पारिबे ओके चलो सो जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमें कहा को कहउचे कहिलो that is found in the regions of कोन ना साउदर्न यूरोप एटा हमरा कोड जगह रे देखा जाए ना मैम साउदर्न यूरोप रे ये देखा जाए साउदर्न यूरोप रे हमें पाई परिबा दिस इज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट दैट मींस कोन ना ड्राई समर्स कैरेक्टराइज हे जे केमिति ना ड्राई समर्स एंड विंटर्स लाइक विंटर्स नहीं ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स सुदी आसी गला ताहाला में ताको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहिबा ओके फॉर एग्जांपल देखो तो अकॉर्डिंग टू कोन कहा को कहि देली ना मैम कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टोटल आपनकर केते टाइप रो हेची एंड इंडिया रे हम देखिबा केते टाइप रे ना ड्राई बेसी देखिबा को मिले रादर देन हमर कोन वेराइटीज ऑफ रहिची हमर एंती पोलर रीजन टेम्परेट रीजन कॉन्टिनेंटल ड्राई ट्रॉपिकल ता भीतर हमर ड्राई एंड ट्रॉपिकल टिके मोस्ट देखिबा को मिले हैला यस यस चलो नेक्स्ट मत कहो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इंडिया's क्लाइमेट इंडिया रा क्लाइमेट को कंट्रोल कला भलिया मेजर फैक्टर कोटा में कहि परिबा देखो कोन अछि ना दैट इज लैटिट्यूड ना अल्टीट्यूड ना मॉनसून विंड्स ना ऑल ऑफ द एबव कोन हबा टिके कहिलो ओनली मॉनसून विंड गाइस कोन पचारि छी ना मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर इंडिया रा क्लाइमेट को आपनकर अल्टीट्यूड भी लाइक डिपेंडेंट अपॉन द अल्टीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द मॉनसून सो राइट आंसर कोन हबो ना मैम ऑल ऑफ द एबव व्हाट ना इंडिया's climate is influenced by the latitude हमें कोन कहूचे ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मने पकाओ आपण माने का मने पकेबे एटा तो छाड़ा डिफरेंशिएट हेची बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मने पकाओ डिवाइडेड इनटू कोन ना ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जदी आपण माने कंसीडर करिवे हमर कोउथिरे हेची ना ट्रॉपिकल जोन एंड अनदर इज सब ट्रॉपिकल जोन ताकू अल्टीट्यूड जदी आपण माने देखिबे अल्टीट्यूड रे आपण माने कोन कहि परिबे बाघाजी क्लास रे वेरी गुड तमे तो टीचिंग क्लास रे आसनी बोधे फर्स्ट टाइम आछा सो अल्टीट्यूड रे हमें कोन कहिबा ना हिमालयस ब्लॉक हिमालय टाकू हमें कहि परिबे से ब्लॉक करके रखिची कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड को हिमालय जदी आपण माने को पचारिबो व्हिच माउंटेन रेंजेस हमर कोन स्टॉप और व्हिच माउंटेन रेंजेस ब्लॉक द cold central Asian wind that is the कौन Himalayas so Himalayas को अपन माने नहीं परिबे that is for the कौन ना altitude example नहीं परिबे right so monsoon winds seasonal and reversal winds पे हमारा आसे that controls the rainfall also right चलो next देखो so factors affecting the climate of India are latitude altitude pressure and wind system distance from the sea ocean currents and relief features so एति के अपन मानकर क्राइटेरिया रहिबो जोथरे के हम कोन ना कैलकुलेट करूछे कि वेदर हमर कोन ना आसीबो ट्रॉपिकल और नॉट और द कंट्रोल द कोन क्लाइमेटिक कंडीशन को को फैक्टर कंट्रोल करूछे हमें ता अंडर रे देखिबा हैला चलो नेक्स्ट मते को द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया एतेटा स्टेट्स देई कि हमर इंडिया रे जाई छि कहलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केतेटा स्टेट देई कि इंडिया रे जाई छि दैट इज 6 7 8 और 9 कौन जाई छि जदी 8 कहूचो कौन जाई छि मते टिके कुवा 8 जदी कहूचो कौन जाई छि टिके मने पकेले आपण मानकर 8 ना 7 टिके कंफर्म हेई जिवो
8 और 7 आपण माने कंफर्म हे जिवे टिके ना गुडा कहिलो कोन अछि ना मैम टोटल रही कोन स्टार्टिंग रे आपण माने कंसीडर करिवे गुजरात को ताबु गुजरात को देन मैम राजस्थान ओके लेफ्ट टू राइट माने ईस्ट टू वेस्ट सॉरी वेस्ट टू ईस्ट को जाउछ राजस्थान को तापर आउ का कोचे ना मैम मध्य प्रदेश को देन छत्तीसगढ़ को राइट देन हम का कोचे ना मैम झारखंड देन वेस्ट बंगाल देन आउ के होची ना मैम त्रिपुरा आउ का छाडी देली 1 2 3 4 5 6 7 टा देला आउ गोटे कोन छाडली कहला आउ गोटे कोन छाडली यस दैट इज मिजोरम यस मिजो को छाडी तो राइट आंसर कोन हो ना देयर आर टोटली 8 ओके वेरी गुड so here you can see total केतरा रहउची ना गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को which oceanic current influences the Indian monsoon so Indian monsoon को किछि oceanic current भी influence करे the monsoon जते बेले इंडिया को आसे before that केमिति आसे ना किछि ओशनिक करंट आपण माने को प्रीवियस क्लास रे कहिथिली किछि कोन ना टुवर्ड्स हमर कोन लाइक ओशन रो लैंड को आसे लैंड रो ओशन को जाए सो देयर इज अ करंट फ्लो हुए सो हम कहि परिबा कि राइट आंसर काहा को कहिदा कुह द एल नीनो माने अछि काहा को कहिथिली ना मैम एल नीनो ला नीना कोन ना एल नीनो ला नीना को कहउथिले that is warming of the Pacific कोन Pacific waters Pacific ocean water को नेकी हमें ताको कहि पारुचे कंसीडर करि पारुचे that is weakens the Indian monsoon okay that causes the drought also so example हमें देख माने पकेबा 1972 2015 दीटा ईयर रे हमर कोन बेसी ड्रॉट कंडीशन इंडिया रे आसीथिला सो ए दीटा मन रखता 1972 that is 1972 2015 ता सहित रिलेट करिवो बहुत ही ड्रॉट कंडीशन आसीथिला एंड ड्रॉट कोथि पे आसीथिला ना ए एल नीनो दैट इज द कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशन पैसिफिक वाटर ता पई हमें रिलेट करूचे दैट स्ट्रेंथन द मॉनसून एंड जदी भलो से न आसीला दैट आल्सो वीकेन सो डिपेंडेंट कहा पर हमें रहूचे ना द क्लाइमेट एंड द ओशनिक करंट फ्लो पई ए ओशनिक करंट फ्लो पई हमें कहा पर डिपेंडेंट रहूचे ना एल नीनो ला नीना ऊपर कोन डिपेंडेंट रहूचे हैला चलो नेक्स्ट एटा आपण मन कहले हम्बोल्ट आपण माने जानि सन्ती व्हाट इज अ हम्बोल्ट करंट दिस इज अ कोल्ड करंट नियर द साउथ अमेरिका रे जो करंट फ्लो हमर होउची ताकू हमें कोन कहूचे साउथ अमेरिका रे जो करंट फ्लो होउचे ताकू हमें हम्बोल्ट करंट बोली कहूचे ताकू टिके मन रखिता हैला कोन हम्बोल्ट करंट एंड जदी हमें देखिबा गल्फ स्ट्रीम कोटा कहूचे ना अटलांटिक करंट गल्फ स्ट्रीम का कहूचे ना अटलांटिक सागर सहित रिलेट करिवो एंड अटलांटिक करंट को हमें गल्फ स्ट्रीम बोली कहूचे करंट देन मते कहले कुरोशिनो करंट हमें कहा को कहिबा ना मैम दैट इज आल्सो द पैसिफिक वार्म करंट नियर जापान कहा सहित हमें रिलेट करूचे ना जापान सहित कुरोशिनो को रिलेट करिवो so japan रे हेले that current is kuroshio current india रे that is el nino la nina current जदि आपण को पचारा गला कोठी ना अटलांटिक करंट अटलांटिक सागर सहित रिलेट करिवो that is the gulf stream and जदि साउथ अमेरिका रीजन रे किछि करंट फ्लो को आपण माने कंसीडर करिवे that is the humboldt current मैम बुक किछि वेदांग रो अछि कि पीसीएम रो ना पंकज भाई बुक एपन तो पब्लिश हेइनी आपण टिके क्लास करंतु क्लास आपण फर्स्ट करंतु बेसिक टिके बुझंतु तापरे बुक को जिवे बेसिक न जानि कि जदि बुक रो पढिबे ताले आपण भी कंफ्यूज हेबे ओके सो नेक्स्ट देखंतु कोन अछि अच्छा दिस इज द करंट फ्लो ओके चलो नेक्स्ट which region in India receives the highest average annual rainfall so India रा को रीजन को हमें कहूचे तो को मते इंडिया रे को रीजन को हमें कहूचे that experience the highest average rainfall केरला कोस्ट और ताकू कोन कहूचे द monsoon और that is कोंकण कोस्ट और वेस्टर्न घाट कोन हबो राइट आंसर कोन हमें देबा वेरी गुड कहि चलो that is केरला और वेरी गुड राइट आंसर हां मु देखु छ आपण माने का मोर देन 400 सिस्मिक मेगालय यस
सो मेघालय टाको आमे कोन कहूचे ना दैट इज द मॉसिनन कोन मॉसिनन कहूचे एम पर मॉसिनन पढिबो एम पर आमे कोन ना मेघालय कहिबा सो मॉसिनन रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड दैट इज जदि आमे देखिबा कि कोन एमएम अकॉर्डिंग देखिबा 11000 समथिंग हमर आसी जिवो एति कि कोन ना मिलीमीटर तार रहूची पर एनम आमे एनुअली जदि ताको कंसीडर करिबा दैट इज द मेघालय and reason kon rahuchi na reason is because of the moist monsoon winds from the bay of bengal ro amara jo moist bay of bengal ro jo amara jauchi kona meghalaya side ku moist like air flow hochi this is the main reason jothra ame koi pariba kaha ku khasi hill example apan man nei paribe kaha ku consider karibe the khasi hill ye amara bahut experience kare clear the bengal are like हमरा बे ऑफ बंगाल रो जो मॉइस्ट एयर आसुची दैट लिफ्टेड बाय द खासी हिल इन ताको लिफ्ट अप करी की नोची दैट्स व्हाई हमें ताको रिलेट करी पारिबा हैना चलो दैट इज कजिंग द हेवी ओरोग्राफिक रेनफॉल ओके हां सबुटु कम जदी आपण कंसीडर करिवे ताहले राजस्थान तापरि भी क्वेश्चन आसुची डोंट यू वरी देखो सो व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मॉनसून इन इंडिया इंडिया रा मानसून ना प्राइमरी कॉज कोन हबा मते कहिलो काहे कि हमरा इंडिया को मानसून आसे एनीबॉडी काहे कि हमरा मानसून आसे यस दैट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स हमरा द डिफरेंट कोन कहि परबा द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द सी कोन ना लैंड सी ऊपर जते बेले हमर कोन एयर हीट हुए अपन माने कहितली एग्जांपल अपन माने नै परिबे जते बेले कोन लैंड रो सी को चाहे कोन सी रिवर्स है कि सी टू लैंड को आसे तो लैंड रो सी को लाइक हमर कोन सी रो लैंड रो सी को हमर के जाय समर एंड विंटर दीटा सीजन को हम कंसीडर करूचे तो दिस इज द मेन सेजे जो थे कोन ना लो प्रेशर ओवर कोन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रे लो प्रेशर एक्वायर हुए जो थे हम रिलेट कर परिबा एंड ए लो प्रेशर रे हाई प्रेशर आसे कोदरे लो प्रेशर हमर नॉर्थ वेस्टर्न साइड रिलेट करो एंड हाई प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन रे हमर क्रिएट हुई सो ए लो प्रेशर हाई प्रेशर जते अपन मन कोन ना एक्सचेंज हुए बिटवीन द लैंड एंड ओशन हमर कोन आसी जाय ना मैम करंट फ्लो आसी जाय हमर वेदर एक्सचेंज होची वेदर चेंज हुए ता हैला चलो नेक्स्ट को मते द नॉर्मल onset of the southwest monsoon in Kerala is around normal onset केबे हुए कहिलो हमर केरला रे मानसून केबे आसे मते टिके कुह the normal onset of the southwest monsoon in Kerala is around the 1st of June रे आसी जाए केबे आसे ना मैम 1st of June रे आसी जाए monsoon hits Kerala coast by 1st of June और टिके आगे पछ हुए few days अपन माने कहि परिबे अप एंड डाउन हे पारे बट ऑफिशियली हमें कहूचे स्टार्ट द रेनी सीजन इन द 1st of June सो जून मंथ हले माने हम माने को माइंड रे कोन आसी जाउची कि मैम रेनी सीजन आसी गला क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते कुह व्हिच ब्रांच ऑफ द मानसून causes rainfall in the western ghat सो को ब्रांच मानसून रो वेस्टर्न घाट रे वृष्टिपात करूची वर्षा होउची ना वृष्टिपात सॉरी रेनफॉल होउची तो वर्षा करूची कहा सहित हम रिलेट करूचे यदि आपन को वेस्टर्न घाट पचारला ईस्टर्न घाट नाही वेस्टर्न घाट जदि पचारुची ताहाले आपन माने कोन कंसीडर करि परिबे कि अरेबियन सी सहित कहा सहित ना मैम आमे ताको अरेबियन सी ब्रांच सहित रिलेट करि परिबा यदि ईस्टर्न हेइथिले आमे बे ऑफ बंगाल रिलेट करथांदे हां कि बे ऑफ बंगाल सहित रिलेट करूचो मोटे वेस्टर्न कहिची संदीप तमे आसी कि बे ऑफ बंगाल सहित रिलेट करचो like seriously very good संदीप तू कौन करछो क्लास रे टिके सुने जा तो ड्यूटी करियो क्लास रे आसी कि मते डिस्टर्ब करना चला सो अरेबियन सी दैट इज द ब्रांच that hits the western ghats first then causing the rain in the orographic rainfall orographic region of the Kerala सो कहा सहित ना केरला सहित हम रिलेट करछो जदी ईस्ट पचारिला ताहाले आपण माने कहा सहित ना बे ऑफ बंगाल सहित रिलेट करिवे हैला चलो सो नेक्स्ट मते को व्हिच ब्रांच ऑफ द मानसून इज रिस्पांसिबल फॉर रेनफॉल इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट सो नॉर्दर्न ईस्टर्न सहित आपण माने रिलेट करले कहा सहित ना मैम नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट सहित हम रिलेट करूछु हैला
रिलेट कर नॉर्दर्न ईस्टर्न सहित आम क्या रिलेट कर तोर जॉब हो सारा आम एते नॉलेज बढ़ा ना तू पला क्लास सो चला which branch of the monsoon is responsible for the rainfall in the northern eastern state कौन हम ऑब्वियसली एठी रिलेट अपन का करिवे ना बे ऑफ बंगाल रिलेट करि परिबे काकू बे ऑफ बंगाल रु एठी अपन माने रिलेट करि परिबे हैला सो नॉर्थ वर्ड्स हमें कहू छे बे ऑफ बंगाल ब्रांच रु कोन जते भी एयर आसीला मानसून आसुची ड्राई कंडीशन आसुची सेटा हमर कोन यस so branch that moves northward and हमें कहिबा that get affected by को रीजन मेघालय से रिलेट करा मेघालय रीजन हैला अरुणाचल प्रदेश से रीजन हैला so ए जो ता रीजन जति को हिल अछि सेटा ने हमर अफेक्टेड हुए that is experience a very high rainfall in Assam मेघालय and Nagaland से रीजन ने त्रिपुरा also so सेवन सिस्टर रीजन ही अपन मानकर कोन बेसी अफेक्टेड हबो हैला वेरी गुड चलो नेक्स्ट so this one jete bela apankara kon cover up kore ocean re then puni ocean to land puni land to ocean so this amara kon summer and winter sahita basic experience rainfall kore kouti na amara seven sister region next dekho the retreating monsoon winds cause maximum rainfall in the retreating monsoon winds cause maximum rainfall kouti experience he mate tike kahila maximum rainfall कोट एक्सपीरियंस हुए yes so maximum rainfall आमे कहि परिबा जदि रिट्रीट करूची मानसून देन आमे तमिलनाडु रीजन सहित रिलेट करिबा का से तना रिट्रीट मानसून दैट इज हेल्ड इन द अक्टोबर एंड डिसेंबर ए रीजन ने आसे जोटा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून बोली आमे ताकू कहूचे जते बेले कि विंड तार पीक को टच करिथिबो विंड pick up the moisture from the Bay of Bengal. कोटो ना Bay of Bengal में moisture pick करिकी से तारे pick के थिबा winter. Okay? ना नवंबर डिसेंबर नहीं मु ताको अक्टोबर से रिलेट करूची. तो अक्टोबर और डिसेंबर पर्यंत आपण माने रिलेट करी. हैला? चलो. नेक्स्ट. तो फास्ट ऑफ मानसून सीजन देन बाकी सीजनल विंड्स को केमति जाए बाकी सब आपण माने चेक करते. साउदर्न ईस्ट मानसून हेले कोन सी टू लैंड को जाए again जदि नॉर्थ ईस्ट मानसून आसिला देन लैंड टू सी को जाए ओके चलो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हाउ मेनी सीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया टोटल इंडिया रे हमें तो जानछि छोट बेलु पढुछे कि मैम 6 टा ऋतु अछि हमर केतेटा ऋतु अछि ना 6 टा ऋतु अछि ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत वसंत बट मते कुह कि टोटल IMD रिपोर्ट अनुसार इंडिया रे हम एक्सपीरियंस करूछे केतेटा सीजन ना मैम टोटल हमें केतेटा ना 4टा सीजन एक्सपीरियंस करूछे 4टा सीजन एक्सपीरियंस करूछे कोन करूछे ना विंटर करूछु समर करूछु एंड गोटे कोन करूछु ना रेनी करूछु एंड जोटा हमर पोस्ट मानसून रेनी परे जोटा आसे पोस्ट मानसून हमें रिलेट करि परिबा यस नारायण सो मते कुहा रेनी हमें करूछे समर करूछे जोटा साउथ वेस्ट मानसून ताको हमें रेनी सीजन कहूछे जोटा कि ऑलमोस्ट जून टू सितंबर भीतर आसे एंड सितंबर पर अक्टोबर टू डिसेंबर जेतेले कि विंटर न आसीथिबो इन दैट पीरियड हमें कोन कर परिबा ना विंटर पाखा पाखी आसीथिबो बट स्टार्ट होथुबो जेतेबेले जोटा हमें कोन कहूछे ना बसंत ऋतु आई थिंक कहूछे ओडिया रे बोलते ताको बसंत ऋतु कहूछे जोटा पोस्ट मानसून कहूछे दैट इज द रिट्रीटिंग मानसून और पोस्ट मानसून सीजन बोली कहूछे अक्टोबर टू डिसेंबर मासरे से आसी ओके चलो नेक्स्ट मते को सो टोटल आपण माने कोन ना समर एंड कोन रेनी एंड ऑटम विंटर एति के आपण माने हां शरत ऋतु कहूछ सॉरी ओके ताको आपण एक्सपीरियंस कहूछ नेक्स्ट मते को व्हिच मंथ मार्क द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया हॉट वेदर सहित कोटा को हम रिलेट करछ टिके कहिला व्हिच मंथ मार्क द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया दैट इज द हॉटेस्ट वेदर कोटा कहूचे ऑब्वियसली हमें कोन ना जनवरी टू मार्च जाय कंसीडर करिबा हॉट वेदर सहित कहा को कोन कंसीडर करिबा जनवरी टू मार्च जाय ना हां जनवरी टू मार्च जाय त माने कोन पे कंसीडर करछो जनवरी त माने को गरम लागेनी की कथा एगुडा सो राइटली हमें कहा को चूज करछे ना अप्रैल टू जून पर्यंत करछे दैट इज द हॉट वेदर सीजन and the pre-monsoon of the summer pre-monsoon season hame kahuche that is marked by the rising temperature that is so high that's why we consider that in the summer okay very good chala next so the winter rainfall in northwest India is mainly due to
नॉर्थ वेस्ट सहित भी आपण मानक रिलेट करछि नॉर्थ ईस्ट सहित भी कहिछि सो नॉर्थ वेस्ट हेले आपण माने कोन कहिदो जते बेले वेस्टर्न कथा पळि आसिला नॉर्थ ईस्ट कथा कहले आपण माने देखुछते ना बे ऑफ बंगाल रु जाउछि दैट्स व्हाई सेवन सिस्टर मानकर कोन जतिक स्टेट अछि हमर रिलेट होउछि एंड से माने सब एक्सपीरियंस करूछन्ती एंड अफेक्टेड भी होउछन्ती बट द क्वेश्चन इज जते बेले विंटर रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे होउछि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे होउछि हमें कहा सहित जंति कि पंजाब सहित आपण रिलेट करि परिबा दैट इज कोथि पई ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोन ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पई ही होउछि ओके वेरी गुड सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक originating in the Mediterranean region कोथि ना Mediterranean region रे एटा हमर एक्स्ट्रा फीचर्स आसुछि so they bring the light rainfall in the Punjab region पंजाब पाखे राजस्थान अछि हम कहि पारे राजस्थान होछि सबटु को लीस्ट रेनफॉल एक्सपीरियंस करूछि होल लाइक कोन होल ऑफ द ईयर so next चला मते कह मैंगो शावर्स हमें कहा को कहूचे एंड मैंगो शावर्स आर प्री मॉनसून रेन्स एक्सपीरियंस्ड इन मैंगो शावर्स को हमें प्री मॉनसून कोली कंसीडर करूचे एंड एटा को रीजन रे आसुचे मते कहिला को रीजन रे आसीबो को रीजन सहित हम रिलेट करूचे मैंगो शावर्स आर द प्री मॉनसून रेन्स एक्सपीरियंस्ड इन where that is the Kerala and Karnataka region कोठी ना मैम केरला एंड कर्नाटका रीजन ने बिकॉज लोकली आमे ताको कोन कहूचे लोकली कॉल्ड एज द मैंगो शावर्स बिकॉज दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज सो मैंगो ए सीजन आसिले ही आमे कहूचे आंबो पाचिबा स्टार्ट हैला जेटा स्टार्टिंग होची कोठी ना हमर कोन केरला एंड कर्नाटका रीजन नु स्टार्ट होची एंड दिस आर द प्री मॉनसून कोन ना प्री मॉनसून कन्वेक्टिव शावर्स क्लियर दैट इज अप्रैल एंड मे केबे कहला ने ताको ना अप्रैल एंड मे सीजन रे ई हमरा आसे जोथरे की आंबो पाचिबा स्टार्ट होय सो यू कैन हैव अ लुक ऑफ द हमर कोन डेफिनेशन सो नेक्स्ट चलो द नॉर्वेस्टर्स दैट इज कोन काला बैसाखी आर वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स कॉमन इन वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स दैट कॉमन इन कोठी अछि मते कहिला अमित पाठ पढुनो चैट रे बहुत एक्टिव रहउछ चलो सो को नॉर्वेस्टर्स दैट इज द काली कोन काला बैसाखी जोडा को हमें कहूचे दैट इज वेरी कॉमन वेयर ना दैट इज इन बंगाल एंड आसाम को रीजन रे ना बंगाल एंड आसाम रे हमें कहूचे ए नॉर्वेस्टर्न और काला बैसाखी एग्जैक्टली कोन ना प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म आसे हमर कोन बंगाल एंड आसाम रीजन रे एंड ओडिसा रे हमर कोन मार्च एंड मे मास रे भी एक्टिव थाए सो हमें तासो तो ओडिसा सहित कहले मार्च एंड मे सहित रिलेट करिबा दैट इज वेरी स्ट्रांग विंड रेन माने गोटे टाइम रे हमर कोन बहुत जोरे पवन भी हुए वर्षा भी हुए एंड समटाइम्स कोन माने जो बुस्ट माने कोन हेल वृष्टिपात भी हमर हुए तो ता सहित आपण माने रिलेट करि पारे हैना चलो so this is the definition you can have a look next which state receives the lowest rainfall in India कोटा सबुठु lowest rainfall India रे कोटा एक्सपीरियंस होची मते कुआ which that is the Rajasthan almost हमें केते कहि परिबा ना less than 10 mm कहि परिबा की less than 10 mm बोली रखू हमें कहि परिबा की that is because of the third desert जैसलमेर सहित काहे की कनेक्ट होची ना because having the third desert that records the 10 mm काहे कहूची रे सेंटीमीटर सहित जाओ सेंटीमीटर सहित जाओ so 10 centimeter annual rainfall that will be कम हेई पारुची that is the lowest in the India okay very good चलो so rain shadow जते बेला हमर आसे that effect continuously हमर इफेक्ट पकाए subtropical high region रे subtropical high pressure जते आसे that subtropical high pressure belt causes for dryness and subtropical high pressure belt कोठी आसे ना dry condition रे desertic condition रे so हमरा desert कोठी अछि थर मरुभूमि सहित रिलेट करिबा that is related with जैसलमेर राजस्थान सहित क्लियर चलो सबठु लोएस्ट कोठी आसुची ना मैम राजस्थान रे आसुची आफ्टर दैट हमें कहि परिबा गुजरात ओके चलो नेक्स्ट मते कह द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न कोस्ट रे हेवी रेनफॉल हुए काहे की हुए व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट काहे की हुए मते कह द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स
heavy rainfall due to the orographic effect कोथि पई orographic effect मैम ये orographic effect कोन जते बेले अरेबियन सी ब्रांच रो हमर मानसून रो जो हवा आसे सेटा हमर कोन पवन ता आसे सेटा हीट करे काहा को ना वेस्टर्न घाट को हीट करे एंड सी हमर कोन ट्राई करे राइज करिबा को कूल डाउन करे एंड कॉजेस द orographic rainfall during the western ghat region okay very good चलो नेक्स्ट चलो तो टोटल मन रखि था केतेटा आपनकर कोस्ट अछि सो ईस्ट रे हमर को बे ऑफ बंगाल सहित आपन कहि परिबे कोन ना कोरमंडल कोस्ट अछि देन या सहित आपन माने रिलेट करि परिबे वेस्ट सहित को मालाबार कोस्ट एंड कोन कोंकण कोस्ट हमर एक्टिवली अछि हमर वेस्ट रे वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट आपन कहि परिबे दैट इज द ईस्टर्न घाट ओके चलो नेक्स्ट रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट काहे कि वेस्ट टू ईस्ट को आसिला भितरे रेनफॉल हमर डिक्रीज हो जाए कोथि पाई डिक्रीज हुए मते मते कोथि पाई डिक्रीज हुए रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट काहे के डिक्रीज हुए बिकॉज ऑफ द राजस्थान डेजर्ट कोथि पाई ना राजस्थान डेजर्ट हमर अछि दैट्स व्हाई मु वेस्ट टू ईस्ट को कहूची वेस्टर्न घाट रु तो ईस्टर्न घाट को आसुची तो डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कहूची तो तम मानकर वेस्टर्न घाट कोन बे डिक्रीज करिवो वेस्टर्न घाट कोड आसीला ठीक है माइंड ता कोन बे रखु न कुआडे सब मन ओडे सकाळ सकाळ रखि के आसीचो तो इन थर्ड डेजर्ट वी कैन से द रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट कोन नियर द अरावली रेंज से अपन माने रिलेट करि परिबो का सेटा अरावली रेंज रु अपन माने जेतले ईस्ट को जिवे बिकॉज़ ऑफ द मॉनसून विंड्स लॉस करिवो मॉइस्चर दैट्स व्हाई हमर कोन जेते बेले वेस्टर्न घाट को आसी जाउची हमर राजस्थान पाखु को आसी जाउची तो बेले वीकेंड हे जाउची है ना पूरी घुगुनी पाखरे अच्छा माधव so this is the definition that the rainfall decreases from east to west in northern India because of the Bay of Bengal branch of southwest monsoon now moves towards the northeast carrying more moisture and they give heavy rainfall in this region hence the bulk of rainfall in India is concentrated over a few months that is mainly from the June to September जोटा कि हमर कोन ईस्टर्न घाट रे हुई बट वेस्टर्न साइड को वाला माने रैपिडली से चेंज हो जाए ओके चलो नेक्स्ट मते को इन विंटर द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स द रेनफॉल मेनली फ्रॉम विंटर रे हमर तमिलनाडु कोस्ट रे हमर कोन ना वर्षा देखिबा को मिले दैट इज because why now because that is the retreating monsoon what is retreating monsoon ma'am north east monsoon जेटा कोन अक्टोबर डिसेंबर रे हम कंसीडर करूचे आसुची बोली that is the north east monsoon ताको कहूचे के अक्टोबर डिसेंबर रे आसे से पीक रे थाए कोन ना the moisture is in the peak from the Bay of Bengal से आसे that causes the heavy rainfall कोन along with the Tamil Nadu and the southern east में कहि परबा आंध्र प्रदेश रे भी somehow आंध्र प्रदेश रा कोस्ट भी हमरा heavily rainfall create करे clear very good almost 50 to 60% हमें कहि परबा Tamil Nadu rain comes from the कोन ना retreating monsoon next मते चलो which city is known for its rain shadow effect रेन शैडो इफेक्ट पे हमरा कोन सिटी रिस्पांसिबल अछि को मते मुंबई पुणे चेन्नई और कोलकाता देखो हमरा कोन पचारी छी ना मैम दैट इज द रेन शैडो इफेक्ट कोन सिटी रेन शैडो इफेक्ट सहित हम रिलेट करि परिबा कि दैट लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट कोठी लीवर्ड साइड हम कोन कहूचे ना पुणे आसी जाउची पुणे आसी जीवा लाइज इन द रेन शैडो जोन रे so relatable कहा सहित हम करिबा ना मैम पुणे सहित definitely that receives very low rainfall compared to the मुंबई को अपन माने कंपेयर करि परिबे दिन राती वर्षा होय जुटे बट बहुत एक्सपीरियंस होची वर्षा हम कहि परिबा that is the wind weight कोन साइड मुंबई ता हमर wind weight साइड हबो पुणे हबो just opposite of that okay so next चला अच्छा अगेन अपन मानु कहूची वैलिडिटी 1.5 ईयर तई अछि 2499 हे जाई आपनकर प्राइस ड्रॉप हे की एंड मते कुह सेटा 26 27 एंड 28 तीन दिन पई ऑफर अछि पवित्र गणेश पूजा एंड नुआखाई उपलक्षे ओके 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 पुण्य बफरिंग होची कोन करि परिबे को टिके रहि जाओ टिके तमरो मोबाइल को टिके ऑफ करि दियो देन ऑन करि दियो चप्पल चोरो
ए ब्लैक लगी कि काई आछो सब क्लास को मते को व्हिच प्लेस records the highest temperature in India मते को व्हिच प्लेस records the highest temperature in India इंडिया सहित हाईएस्ट टेम्परेचर आमे कहा को रिलेट करि परिबा को मते व्हिच प्लेस दैट records the अच्छा हाईएस्ट टेम्परेचर पचरिछि ता माने त आपण राजस्थान को जिबे हरि दैट इज अ फलोडी डिस्ट्रिक्ट कोडी राजस्थान ला फलोडी आमे कहि परिबा हाईएस्ट हमर केबे थिला कहबी ऑन 2016 ने फलोडी रे सबटु हाईएस्ट रिकॉर्ड हेछि 51 डिग्री सेल्सियस 51 डिग्री सेल्सियस 2016 ने सबटु हाईएस्ट थिला ओके द हाईएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया एज ऑफ नाउ ओके चलो नेक्स्ट मते को the coldest inhabited place in India is the coldest inhabited place in India में कहा को कहूचे हाँ जैसलमेर रे भी हबो बट जैसलमेर तो डेजर्ट अछि दैट्स व्हाई हमें कहि परिबा बट दैट इज नॉट द मैक्सिमम वन दैट इज नॉट द मैक्सिमम वन बर्मा रीजन ने भी हमर 48 टू 49 बट हाईएस्ट जेहेतु हमर कोठी हाईएस्ट हमर रिलेट हेतिला फलोडी रे तो फलोडी का हमें कंसीडर करूचे है ना ओडिसा हाईएस्ट टेम्परेचर ओडिसा हाईएस्ट बोधे से 44 45 या फिर 46 जाए जाउछ चलो द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन इंडिया इज कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इंडिया रे में कहा को रिलेट करूछ मते को ऑब्वियसली लद्दाख को ही करबा जम्मू एंड कश्मीर काई करूछ जम्मू एंड कश्मीर नहीं दैट इज द द्रास ऑफ लद्दाख द्रास दैट मींस कोन ना इज द गेटवे टू द लद्दाख को जीवा पाई दैट इज द गेटवे हमें कहि पारुछे हैला दैट इज द गेटवे दैट इज कॉल्ड एज द द्रास दैट नोन एज द कोल्डेस्ट कोन इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया केते ना माइनस एठे जदि आपण माने कोल्डेस्ट कहउचे ना सेठी आपण माने एक्सपीरियंस करथले 50 डिग्री एठे -45 डिग्री ता सहित रिलेट करिवो -45 डिग्री सेल्सियस एठे आपण माने एक्सपीरियंस करूचंदी श्रीनगर हेइ जेबो कोल्डेस्ट ले सब हमर कोन कोल्डेस्ट बिकॉज़ ऑफ द हाई अल्टीट्यूड रे प्रेजेंट अछि बट स्टिल अमंग ऑल हमें कंसीडर करछ का कुना लद्दाख रीजन को द हाईएस्ट ओके द लीस्ट टेम्परेचर कोट एक्सपीरियंस करूचे ना लद्दाख है So next mate ko which factor influences the differential heating of land and sea in India? Tell me. So which factor influences the differential heating of land and sea in India? What will be the right answer? Obviously pressure gradient asibo. कोन ऑप्शन त माने कर कोन लैटिट्यूड आसी जाउची लैटिट्यूड कोथि पे आसुची हां अमिक बाघ लक्ष्मीधर लैटिट्यूड कौन पाई which factor influence the differential heating of land and sea कोथि पे से आपण मानू को एबे बुझ बुझैतिली प्रेशर ग्रेडिएंट आसीले जते बेले लैंड हीट करिवो एंड पूरी कूल करिवो फास्टर देन द वन मान कोन हमें कहि परिबा वाटर अछि ड्यू टू दैट हमें कहि परिबा लैंड रे हीट हेकी पूरी पानी ताकू गले पूरी ठंडा हबो पूरी थरे ठंडा पवन आसीबो पूरी थरे गरम हबो पूरी थरे ठंडा हबो सो दिस इज द प्रोसेस जोथि हमरा कोन होचे दैट कॉजिंग द प्रेशर डिफरेंसेस देन द वाइंड कोन हबो शिफ्ट हबो देन अगेन हमरा कोन monsoon circulate करिवो एंड डेवलप करिवो कोन द डिफरेंशियल हीटिंग कंडीशन ओके चलो नेक्स्ट मते को जेट स्ट्रीम सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ए जेट स्ट्रीम हमर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करूची काहा को करूची मते को जेट स्ट्रीम कहले आपण माने सब बेले समर मानसून सहित ताको रिलेट करिवे हां एबे आसिला विंटर रेनफॉल इन साउथ कोन बा एमते सब आंसर मारुचो मुंडा पिटी देख मोर इच्छा है टाइम दे आंसर मारुचो जेट स्ट्रीम सिग्निफिकेंटली काहा सहित आसीबो ना समर मानसून सहित मैम आसीबो because jet stream माने हमें कौन कहउचे that is the soft tropical कोन westerly and tropical easterly jet soft tropical and tropical सहित आपण माने westerly and easterly सहित कनेक्ट करिवे जोटा कि गाइड करिवा कोन ना onset strength and the withdrawal of the Indian monsoon तले withdrawal होउची तो हम रिलेट करूछे ना समर मानसून सहित का सहित ना समर मानसून सहित रिलेट करूछे चलो winter rainfall in south india अपन कोन ऑप्शन मारथिले ऑप्शन बी मारथिले इनिशियली ना कि winter rainfall in south सहित मारथिले दैट इज मेनली ड्यू टू द रिट्रीटिंग मानसून जोटा अपन मानको अबिका कहिथिली का सहित ना रिट्रीटिंग सहित रिलेट करिथिली किछि भी मन रखना नेक्स्ट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हैज an equable climate सहित हमें रिलेट कहा को करिबा को which of the following reasons has an equable
क्लाइमेट कहा सहित रिलेट करिबा इक्वल क्लाइमेट लाइक गरम सेति की ठंडा सेति की पूरा बैलेंस हे की रहिछि द नैरो टेंपरेचर रेंज ड्यू टू द मराइन इन्फ्लुएंस सहित आपण माने मुंबई को रिलेट करिवे मराइन आसिले मुंबई को रिलेट करि परिबे एंड अरेबियन सी अछि ड्यू टू लाइक हमरा कोन कोस्टल सिटी ऑफ मुंबई इज द कोस्टल सिटी एंड हम कहि परिबा हैज अ माइल्ड समर्स एंड विंटर्स ड्यू टू द अरेबियन सी इफेक्ट ओके चलो नेक्स्ट सीमा मते कहो लू इज अ हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग इन लू हमरा कोठी ब्लो करे मते कहिलो दिल्ली रे सेम तो लू इज अ हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग इन पंजाब राजस्थान पंजाब राजस्थान नॉर्दर्न प्लेन्स आसाम और केरला कहा सहित आम रिलेट करूचे कहा सहित रिलेट करूचे टिके कहिदेला लू सहित आम कोन लू जते बेले कथा आसिला ना आपण माने राजस्थान एंड नॉर्दर्न प्लेन सहित पढिबे कोन दैट इज लू इज अ वेरी हॉट डस्टी ड्राई एंड विंड आम कहि परिबा जोटा कि हमर लू रहउछ जोटा कि मेनली मे एंड जून मासरे आसे ओके ओके सो राजस्थान हैला पंजाब हैला हरियाणा हैला दिल्ली हैला हमर यूपी हैला बिहार हैला ए सब हमर कोन नॉर्दर्न प्लेन जते अछंदी दे ऑल द स्टेट्स आर एक्सपीरियंसिंग द लू नेक्स्ट मते को व्हिच विंड ब्रिंग्स डस्ट स्टॉर्म इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर एबे ही कहली मते को एबे ही कहली एका थरे को हमर कोन मे जून से रिलेट करी लू विंड्स ऑफन का सहित ना लू विंड्स ऑफन कैरी द डस्ट स्टॉर्म आल्सो okay that reduce the temperature briefly reduce करे temperature को and we can say that is important feature of the northern Indian summer okay very good चलो next मते को the fan like local wind in Jammu and Kashmir is fan वाला गोटे local wind हमारा बुहे हड्डिया सुत्ता अच्छा so fan like ता सहित में कहा को रिलेट करू छे एठी आपण माने कोंदो this is a important one and त माने को मजा लागियो सुनले तो ऑप्शन कोन हबो ना 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 सुंदर नुह सुंदर नाई आपण माने जदि सुंदर देखिबे दैट इज द कैलिफोर्निया सुंदर को एठी कोड आसला इंडिया रे केते देखिचो कैलिफोर्निया सहित ताकू रिलेट करिवो दैट इज द लोकल विंड इन द कैलिफोर्निया हमें ताकू रिलेट करूछे तो ऑप्शन ए कोन सब ऑप्शन मारिबो मु गोटे आंसर देबी थापर त माने कहिबो द बेंगल एंड आसाम रीजन रे कोठी ना बेंगल एंड आसाम रीजन ने जो लोकल विंड मुहे ताको हमें नॉर्थ वेस्टर बोली कहउचे सॉरी लोकल विंड नहीं थंडरस्टॉर्म को हमें नॉर्थ वेस्टर बोली कहउचे बेंगल एंड आसाम रीजन रे ओके सो अच्छा आ गोटे कोन आसिला वार्म चिनुक हमर अमेरिका सहित को आपण माने अमेरिका सहित रिलेट करंतु अमेरिका सहित रिलेट करिवो रॉकीज एरिया रे से आसे सो रहिला कि खान्स जम्मू एंड कश्मीर सहित रिलेट करछ खान वाला माने सब तांको रिलेट करि परु ना खान माने को रिलेट करि परु ना हां राइट लास्ट को ऑप्शन डी त माने कर हे गला माने नाक को एंती त माने धरिबा एंती बुले बाले कि नाक को धरिबा हेलो सो खान्स को कौन कहउछे खान्स आर द वार्म ड्राई लोकल विंड इन द जम्मू कश्मीर सिमिलर टू द फॉन विंड्स इन द अर्थ से हमर आसे जेंती फॉन विंड्स ताहा सहित हम रिलेट करि परिबा अच्छा चलो नेक्स्ट मते को मते विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज पॉपुलरली नोन एज विंटर रेनफॉल हमें तमिलनाडु रे कहा सहित रिलेट करूछे मते कहिलो विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु पॉपुलरली नोन एज व्हाट ना तमिलनाडु रीजन हेले मैम नॉर्दर्न ईस्ट पुनी ए मारिलणी माने कोथि पई चेरी ब्लॉसम सावर्स आसिलणी हां एबे कहिथिली ना नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून सहित रिलेट करियो पाठ पढारे सिना मन थिले किछि हबो पाठ पढारे त मन नै काली केंती गणेश पूजा हमें कोठी की जिबो कोछियो थिबो ताकू लाइन मारिबो ताकू दिटा जाबडा खाइबो एठी न मानकर मन आ केमिति त मन पाठरे मन रहइबो बार बार रिपीट करछि तापरे भी भूल चढ़ा छी लाज लगे कथा तम मानको सो नॉर्दर्न ईस्टर्न मॉनसून सहित हम रिलेट करूछे दैट इज द रिट्रीटिंग मॉनसून 50 पर कहली जदी सेकंड टाइम में क्वेश्चन आसीला रिलेटेबल क्वेश्चन आसीला आ न कहि पारिलो ताहाले पुनी देखिबो एटा हैला चला सो 50 to 60% रेनफॉल हमरा कहि दिली कोठी ना तमिलनाडु रीजन रे एक्सपीरियंस हुई
नेक्स्ट मते को व्हिच लोकल विंड इज एसोसिएटेड विथ सैंडस्टॉर्म इन राजस्थान लोकल विंड जे कि सैंडस्टॉर्म नहीं के आसे राजस्थान ने ताको हमें कहा सहित रिलेट करबा कुह तमे मैंने पा इत्ते गालवा पूरा गांधीवादी माने जाबदा मारले भी तमे आ गोटे गाल देखिए दबो कि मैम मारंतु पछे आमे पाठ पढिबुनी आमे एई बातरामी करिबु yes right answer कौन होता obviously that is Lu yes or no that is Lu so Lu winds often lead to the dust storm and sandstorms in the Rajasthan during the peak summer obviously May and June सहित relate करिवो है ना चलो next मते को एठी ऑप्शन अछि कोन कहलो काला बैसाखी आपण माने को कहिथिली कि कोठी ना थंडरस्टॉर्म ऑफ द बेंगल एंड आसाम रीजन रे हमर आसे बेंगल एंड आसाम हेले काला बैसाखी को रिलेट करिवो जेट स्ट्रीम हेले आपण माने कोन हाई अल्टीट्यूड विंड हेला जेट स्ट्रीम ता सहित रिलेट करिवो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमर विंटर रेनफॉल पय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुए तो नेक्स्ट मते को राजस्थान मेनली कम्स अंडर व्हिच क्लाइमेट टाइप राजस्थान मेनली कम्स अंडर व्हिच क्लाइमेट टाइप को क्लाइमेट टाइप रे हमर राजस्थान आसीबो दैट इज द ट्रॉपिकल डेजर्ट obviously having the third कोना राजस्थान especially for the third desert we can say has the arid hot desert climate that is within almost I कहि दरिया 25 cm that भी कम rainfall सेठी experience हुए all over the annum next the Himalayan region experiences which type of climate Himalaya region सहित अच्छा मैम मु झियों को देखिले प्रणाम करे असम्मान करेनी अरे वाह वेरी गुड माधव देखो माधव कौन ओटे कहिले सिख किछि तो रिलेट करो मते कुआ हिमालय सहित राजस्थान सहित अपन रिलेट कले डेजर्टिक कंडीशन सो तुंद्रा जो वर्ड अछि तुंद्रा हेला अल्पाइन हेला एटा में कहा से रिलेट कर परबा ना ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड हिमालय alpine climate alpine means kona that is very cold snowy and there is no vegetation above the kona snow line kichi vegetation hi possible hei na thai okay chala next kai bolo ho ja the coastal Tamil Nadu has which type of rainfall pattern ebbe कहथिली ebbe खाली यार आंसर न दियो तापरे तमन को देखियो coastal सहित मते कुआ coastal Tamil Nadu has which type of rainfall pattern summer rainfall winter rainfall and both summer and winter equally or that is the sandy rainfall हाँ आसिले पंडित बाबू आसिले हमर की सोनी सोनाली हाँ सब अमित भी कहले हमर बहुत सी हबो काई को खुशी रे हबो आपण मानक पर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून सहित रिलेट करथली अक्टोबर टू डिसेंबर सहित रिलेट करथली समर रेनफॉल सहित करथली देन हमें कहि परिबा कि दैट रिसीव्स द रेनफॉल मेनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कोटा ना विंटर रेनफॉल कोनटा आसीबो विंटर सीजन रेनफॉल क्लास स्टार्टिंग रे मु त मानक घोसुची क्लास स्टार्टिंग रे घोसुची माइंड सिना पाठ रे थिले किछि हबो 50 to 60% तमिलनाडु रेनफॉल इज विंटर रेनफॉल बोली 50 थर रिपीट करि सारलिनी ता परे भी आपण मानकर बोथ अच्छा बोथ हबो अरे वाह विंटर डोमिनेट करिक रखे बोथ यदि इक्वली आसीबो ना समर एंड विंटर्स इक्वली केते बेले आसेनी आइदर विंटर डोमिनेट करिक रखिबो नहले समर डोमिनेट करिक रखिबो बाय बाय असुची चलो नेक्स्ट व्हिच क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट diurnal temperature range highest diurnal temperature सहित हम रिलेट करबा काको ऑप्शन हटांतु ऑप्शन हटे भी कोन पे एग्जाम रे तमन को एमिति ऑप्शन आसीबो जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज ऑप्शन हटांतु ये मते आसीबे कहिबे ऑप्शन एटा रखंतु हमें से अनुसार आंसर देबो कोठी तम घर कोठी एक्चुअली कार्लोस कोठी तम घर इकोनॉमी क्लास आनिबा इकोनॉमिक्स क्लास मोर नै पॉलिटी इकोनॉमिक्स केडी सारा क्लास हला मोर आपनकर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ओके तो मते को which climatic region of India experience the highest diurnal temperature range highest diurnal temperature हे गले आपण माने ऑलमोस्ट आपण को डेजर्ट रीजन को पळेबे एटा भी भाबिया पई अछि कि कोठी कि ना डेजर्ट कंडीशन को ही आपण माने जिबे ओके चलो तो नेक्स्ट मते को the Konkan coast experiences कोन कोंकण कोस्ट सहित कहितली कोठी वेस्टर्न घाट रासी जाउची कोंकण सो
the Konkan coast experiences heavy rainfall due to what? That is retreating monsoon. एबे कहिथिली retreating monsoon हेले आपण माने का साथ रिलेट करबा ना मैम तमिलनाडु रीजन सहित रिलेट करियो 50 थरा कहिबी नाही वेरी गुड तथा भी 35 सी आसिला सुखोई M30 सुखोई काहेकी आसिला that is the south west monsoon कोन आसीबो साउथ वेस्ट monsoon Arabian Sea रु आसुची Arabian Sea branch रा कहबा that strike the western Ghat and our oceanographic rainfall हुए सॉरी कोनटा orographic rainfall हुए कोठी ना कोंकण आ गोटे कोन थिला मालाबार कोंकण एंड मालाबार कोस्ट रे हुए कहिथिली तापरे भी चलो so we see is the origin of most cyclones affecting India's east coast कहिला so एठी रहिगला हमर वेस्ट एठी रहिला ईस्ट so ईस्ट कोस्ट सहित कोटा हम रिलेट करूछे ईस्ट कोस्ट सहित आखि बंद करके आपण माने कहि परिबे कि ईस्ट कोस्ट सहित 70 to 80% ऑफ साइक्लोन्स फ्रॉम द बे ऑफ बेंगल ओडिसा पूरा कोन डुबी के अछि दुथरे कोथरे ना साइक्लोन रे जोटा कि बे ऑफ बेंगल रु आसुची ड्यू टू द वार्म कंडीशन ओके चलो so that is the Bay of Bengal. So next one is tropical cyclones in the Bay of Bengal are locally cold. Tropical cyclone हमरा आसे Bay of Bengal ताको locally हमें कौन कहूचे locally कौन तार कहूचे cyclone भी ना कहूचे ना typhoons अच्छा एठी आपण माने कंफ्यूज हेबा का बहुत चांसेस अछि कारण कौन राइट आंसर ना cyclones ही हबो there is no local name there is only cyclone there is no local names but हमर कोन hurricanes आपण माने कोठी आसे मते कहलो ना अटलांटिक रीजन सहित आपण माने रिलेट करि परिबे hurricanes आसे सेम टाइफोन्स हेले आपण माने पैसिफिक ओशन सहित आपण माने रीजन रिलेट करि परिबे टाइफोन्स को काला बैसाखी आपण माने कहिथिले एमिति आसाम रीजन सहित रिलेट करिवो काला बैसाखी प्री monsoon thunderstorm कोठी ना बेंगल एंड आसाम रीजन सहित रिलेट करिवो एठी करिवनी सो आपण माने को कंफ्यूज करिया राइट काला बैसाखी कहिछि कोथि पई काला बैसाखी कहिछो चलो नेक्स्ट द ओडिशा सुपर साइक्लोन अकर्ड इन व्हिच ईयर पहिला टिके देखि एटार भी काले कंफ्यूज थिबो एटार भी मे बी कंफ्यूज थिबो डेट सहित मते टिके कहिबो डेट सहित मु जानि छी आपण मानकर बहुत ज्ञान 1900 मसियाटा को पूरा छाती रे छापी की रखछो त माने मते को डेट सहित को दैट इज 29th of October एग्जैक्टली डेट हबो केते ना 29th of October 1999 आपण मु पागल त माने 1999 महाभारत भूली जाइथो बोली भाबुजी ना कोन ना यस चलो नेक्स्ट मते को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिन हेची कोठु मते कहिलो कोठु ओरिजिन होची वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोठु मेडिटेरेनियन रेंज रो बे ऑफ बेंगल तो हबनी त ईस्टर्न को पळेइसला राइट बे ऑफ बेंगल को तो हबनी साइड बे ऑफ बेंगल हमरा साइक्लोन्स आसे अरेबियन सी दैट इन्फ्लुएंस द मॉनसून अरेबियन सी पई हमर मॉनसून इन्फ्लुएंस हबा हिमालयस हमर कोन ब्लॉक हिमालयस हमर ब्लॉक करके रखिबो सो या से रिलेट करन राइट कोन हबो ना मेडिटेरेनियन रीजन ताको हमें कहूचे दैट इज द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होची कोठु ना मेडिटेरेनियन रीजन टू हां सब एलिमिनेट हे गला पर ए हबो कोन तो किछि जानि न मैडम गोटे एलिमिनेट करन तो लास्ट को हमें कहि देबो जोटा बंचिला तो को साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी जनरली अफेक्ट अरेबियन सी रे साइक्लोन आसिले जनरली अफेक्ट करिवो कहा तो मते को ओडिसा को तो करिवनी जदी बे ऑफ बेंगल ले आसिला ताहाले ओडिसा को करिवो राइट बे ऑफ बेंगल ले आसिले ओडिसा को करिवो जदी अरेबियन सी रे आसिले गुजरात को कारण बे ऑफ बेंगल आसिले ओडिसा को करिवो वेस्ट बेंगल को करिवो राइट ओडिसा को करिवो वेस्ट बेंगल को भी करिवो सो गुजरात समटाइम्स हमें कहि परिया महाराष्ट्र एंड केरला को भी करूछु बट मोस्टली हमें कहबा जदी अरेबियन सी रे आसिला डायरेक्टली गुजरात विल बी अफेक्टेड क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को monsoon acts as a unifying bond in India because monsoons act as a unifying bond in India because of why because it brings uniform culture it provides rainfall across the country it helps the transport it supports the tourism कोथि पई हबो monsoon act because it provides the rainfall across the country so agriculture pai hela water resources pai hela economically development pai bi hela all depend on the seasonal monsoons rain okay
नहल तो हमर ड्रॉट कंडीशन पळे आसुची राइट चला Next quote, which of the following years saw a major drought in India due to the El Nino? So मते कहला ए El Nino सहित हम रिलेट करूचे सेही वर्ष कहितली 2015 सहित आ गोटे वर्ष को लेखिकी कहितली 2015 सहित आ गोटे वर्ष लेखिकी कहितली सुखोई हमको टेकी के साडे बाहर को फोपाडी देबी तमन समस्त की पीटी भी कहूची स्टार्टिंग रे मु लेखितली 2015 सहित आ गोटे ईयर लेखितली सेटा 1972 लेखितली कौन लिखी ना 1972 लाइक स्टार्टिंग अपन देखिबे तो 1982 रे भी हेतिला 72 सॉरी 1972 अपन स्टार्टिंग करि परिबे 1972 रे तापर 1982 रे हेतिला तापर 87 रे तापर 2008 ना 8 रे हेनि 2009 रे हेतिला तापर 2002 रे भी हेतिला 2015 रे हेतिला बट अपन मान को रिलेटली कहितली 1970 सहित 2015 कहितली जोटा कि फर्स्ट एंड लास्ट को रिलेट करके कहितली इछि तमनकर किछि हेई परिबनी चलो Next, what the break in monsoon usually occurs in the month of. The break of monsoon usually कितने बड़े हुए मत देखो. The break of monsoon usually occurs in the month of. Usually occurs in the month of where? Break हुए. June ने हमारा start हुए में कौन से breaking in the monsoon temporarily that dry the spells in the July and August. क्या बे? ना July and August तो July सहित जाओ. July सहित जाओ. Okay, very good. चलो. Next which Indian state receives both southwest and northeast monsoon rains? को रीजन हमें कहूचे सॉरी को स्टेट हमर कहूचे कोन को भाबी दियो साउथ वेस्ट होची नॉर्थ ईस्ट भी होची साउथ वेस्ट भी हबो नॉर्थ ईस्ट हबो दोतरे आपण मन को कोन कहिदिली द वर्ड कहिदिली मने पका आउ थरे कहिले गाली करिवि दैट इज वेरी गुड दैट इज तमिलनाडु कहा से रिलेट करूचे ना अक्टोबर डिसेंबर रेनफॉल होची नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून आसुची एंड सम रेनफॉल फ्रॉम द साउदर्न वेस्टर्न भी आसुची कोठी ना एक्सपीरियंस करूची दैट इज तमिलनाडु द ब्रांच ओके नेक्स्ट द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडियाज क्लाइमेट बाय अच्छा हिमालय हमरो मैम बिक्की सर का क्लास कोन पे होनी लिपिका मैडम बिक्की सर का मैडम आपनकर लाइक सी इज एक्सपेक्टिंग सो तांको हॉस्पिटल नै कि तांकर डेट अछि तो जिबा आसीबा ए सब रे तो बहुत जल्दी जो दिन बिकी संग क्लास होबो से आपन को गुड न्यूज धरि आसीबे विथ लड्डू हैला सो द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडियाज क्लाइमेट बाय दैट इज द ब्लॉकिंग कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया हां सहित द ब्लॉकिंग द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया हैला वेरी गुड चलो नेक्स्ट म देखो which place in India receives the snowfall in winter time रे इंडिया रा को जगह में कहूचे ताको snowfall receive करूची obviously आपण मानकर कोन शिमला सुनी की मन पर बिल्कुल होथुओ कि केबे विंटर आसीबा हमें सब गोटे वैकेशन रे जिवु आरो गोटे जॉब करो तापर शिमला जिवु आगो गोटे जॉब करो obviously be back expecting कुहा जाउची माने कोन कुहा जिवो she is expecting that means कोन किछि भी so that is Shimla कहा को रिलेट करिवो ना शिमला सहित रिलेट करिवो बिकॉज़ द हिल स्टेशन कोन हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर सहित भी रिलेट करिवो उत्तराखंड सहित भी रिलेट करि परिवो बट एठी ऑप्शन आपन मान के शिमला अछि सो गो विथ द शिमला ऑप्शन हैला जॉब ओडे करो तापर शिमला फिल्म जिवो which is the rainiest state in India सब तो रेन अधिक एक्सपीरियंस करूची को स्टेट हमर इंडिया रा Yes, so mate kuha Madhav Babu kuhandu mate which is the rainiest state in the India? That is Meghalaya, Kerala, Assam and Nagaland. हाँ, समस्त ऑप्शन केरला कौन पाई ऑप्शन डी रिसीव द तो कहउचंदी नागालैंड को केते हेतिला आपण मान को कहिथिली कोन मेघालय सहित रिलेट करिवो मेघालय सहित रिलेट करिवो दैट रिकॉर्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल 1000 सेंटीमीटर रु अधिक more than the 1000 सेंटीमीटर ता सहित रिलेट करि परिवो केरला रे भी हेवी रेनफॉल हुए बट मेघालय टू लेस हुए मेघालय तमे कहिछ ना जो माने न कहिसंती तांको पई so the burst of monsoon refers to monsoon refers to what कोथि पई that is for the कोना ना sudden onset of the monsoon with the heavy rains cyclonic rainfall rerouting the monsoon pre-monsoon showers what will be the right answer PURI class regularly होनी काहे कि रश्मि होउची तो की कहला होनी रेगुलर ही होउची
सो राइट आंसर कौन हबो राइट आंसर हमें कहा को रिलेट करछे ना दैट इज द सडन बर्स्ट ऑफ मॉनसून मीन सडन बर्स्ट हो जाउछे हमें कोनी मो खुशी रे आउटबर्स्ट हे गली दैट मीन सडन किछि रिएक्शन हमें दोछे दैट इज द बर्स्ट so burst of monsoon means sudden onset of the monsoon with the heavy rainfall ताको हमें कौन कहछे ना burst of monsoon okay that sudden violent of rainfall after the pre monsoon hot summer period so next मत देखो the Arabian Sea branch of monsoon reaches Delhi roughly by Delhi को केबे पहुंचे मते टिके कहिलो Delhi को केबे पहुंचे the Arabian Sea branch of the monsoon reaches Delhi roughly by 1st of July June and July दीटा अपन मानु कंफ्यूज करिथिबो बट गो फॉर द 1st July ऑप्शन सी आसला 15 जुलाई काई 15 तारिख तो तुमको एते फेमस एते 15 तारिख तो तुम मानकर काहेकी मैम in which branch brings more rainfall during monsoon Bay of Bengal branch of Bay of Bengal ले आदित्य Bay of Bengal obviously okay चलो 1st जुलाई हेले केरला सहित रिलेट करियो 1st जुलाई का कोन दिली का से केरला सहित रिलेट करियो 15th जुलाई सहित नहीं 1st जुलाई एंड 1st जून सहित रिलेट करा हैला आ किछि नहीं 1st जून 1st जुलाई जून हेले आपण माने केरला सहित रिलेट करंतु एंड जुलाई हेले दिल्ली सहित रिलेट करंतु चला लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंडियाज क्लाइमेट को बेस्ट इंडियाज क्लाइमेट को बट सम आंसर इज अरेबियन सी ब्रांच सम केमतिया बे ऑफ बंगाल ही हबो ना स्टिल ताको अथरे टिके वेरीफाई करबा ओके आदित्य तो go which of the following best explains India's climate India रा climate को best किए explain करूछे ना मैम tropical sorry most नहीं tropical monsoon desert मारते tropical monsoon yes the India is equal to the tropical monsoon climate that is the seasonal reversal of the winds wet and dry seasons both are suchi that's why we consider India as the tropical monsoon climatic condition clear tropical desert हेले कोन कहउछे ना ओनली राजस्थान विषय जदी हमें कंसीडर करबा ओनली राजस्थान ऊपर क्वेश्चन आसीबो देन हमें कहबा दैट इज अ ट्रॉपिकल डेजर्ट जदी सब आर्कटिक हेले आपण माने हिमालय सब आर्कटिक हेले हिमालय से रिलेट करबा मेडिटेरेनियन हेले मेडिटेरेनियन हमरो इंडिया रे ही ना तो ए क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेट करबो ना ओके सो अगेन आपण माने को कहूची 2499 अछि ऑफर जोटा कि ओनली 3 दिन पाई ओनली 3 डेज पाई ऑफर एक्टिव अछि वैलिडिटी 1.5 ईयर भीतर आपण मानकर जते भी एग्जामिनेशन आसिला स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे सब किछि आपनकर या अंडर रे ही कवर अप हो ओके तो 26 27 28 हमर 3 दिन ऑफर अछि सो डू नॉट डिले जस्ट ग्रैब द ऑफर एंड जस्ट हैव एंड जॉइन द बैच ओके 10 मिनिट राधे मैम 10 मिनिट रहिबे मैम कोन पई गलस इरिटेट करूछ मते तमे बहुत क्लास रे आउरी 10 मिनिट रहि तम संगे बिल्कुल नहीं काली छुट्टी हां काली छुट्टी तो गणेश पूजा रे पाठ पढिबो जदी कहू ना मु आसीबी हेल्पलाइन नंबर नहीं केठी मेंशन अरे हेल्पलाइन नंबर ता कोन तम माने जानि न हेल्पलाइन नंबर तो तम मानको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे भी कहि दिली ताको देखा सोनी से वेदांग रे ना because they I care रे पढा कहा विषय रे कथा चली छी सॉरी डिड आई मिस समथिंग काली पाठ पढ़ा बंद आ तम माने कोन जान स्कूल पिला भी तमठो टिके उन्नत होइथिबे स्कूल पिला भी भाबु जंदी कि केमिति हमर पुष्पांजलि देई सारिबु जाई कि राती रे बसी कि मुंडिया मारी कि पाठ पढिबु त माने तांकटो भी आहुरी तळगु जाउछ गणेश पूजा हैला माने हमर पूरा भसाणी न हैला जाय हम पढिबुनी पूरा विसर्जन हबो तापर हम जाई कि पाठ पढिबु कि पिल्ला रे सबु गणेश पूजा भोक देवे सब आसीबा ऑफिस को नबो आ कोन चलो ट्वेंटी एट एग्जाम अच्छी टिके ब्लेस कर माधव गॉड ब्लेस यू ब्लेसिंग बापा मांकर ब्लेसिंग्स इंपोर्टेंट हुए टीचर्स मानकर ब्लेसिंग भी दरकार बट आमे पढौछु ना तुमको सेतिकी सॉफ्ट हार्टली सेतिकी प्योर हार्टली आमे तुमको पढौछु कि तुम मानकर एग्जाम हो बोली वी आर नॉट हियर फॉर द टाइम पास ओके आमे चाहूछु तुम माने किछि लाइफ रे बन तो हमर ब्लेसिंग्स तो सब बेले आपण मानकर सहित अछि हैला तो मागिबा दरकार नहीं आमे ऑलरेडी आपण मानकर भलो ही चाहूछु सब बेले ब्लेसिंग्स रे
मु तो माता तारिणी को सब बेले डाके कि पिला गुड़ा एते कष्ट करूचंदी जो माने कष्ट करूचंदी लफंगामी करूचंदी से मानन को पई तो नाही ओके सो सुधुरी जा तो समस्तिंकर जॉब हे जा चलो जल्दी जल्दी जॉब हे जा विंटर रे कोन विंटर आसिया पूर्व तो माने पैकेज रेडी करथो शिमला पे जाई कोडे बुली के आसीबो तापर जॉइन करिवो चलो bye bye guys have a good day take care of yourself but first of all do prioritize your parents first this should be your first priority no one else in the world okay keep that in your mind and move ahead thank you bye bye happy ganesh puja chalo happy ganesh puja and happy nuakhai to all thank you bye bye